Hello everyone, a warm welcome to the Gratitude Series Day 19. In the last lesson, we discussed on how to cultivate gratitude in our life. In that, we discussed about 3 important ways to cultivate gratitude. Those were journaling, gratitude garden technique, and Naikan, the Buddhist meditation. So in today's session, we shall understand what are the biggest obstacles to our gratitude. And how, by just understanding it, we can remove those blocks from our life. So many times what happens is, we don't realize is that it is an obstacle to our gratitude. So if we realize it, if we understand this concept, we will be able to eradicate that from our life. And we will have that consciousness that, okay, I am not being grateful. So instantly you will change your perception to things. So the first obstacle that I call is the sitting on the high horse syndrome. The I deserve this and I owe this attitude. Now, did you know research has shown that people who are ungrateful, they tend to have a sense of excessive self-importance. वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं. And that is the reason why they might be very arrogant. They need admiration, recognition, and they are self-absorbed. और इस तरह के लोग ही हैं जो lack करते हैं empathy, which is required for a beautiful relationship. ये बहुत अपने बारे में सोचते हैं. इनको लगता है, they feel that they owe from life and others, and that is the reason why they are not thankful or grateful. तो उनको क्या लगता है कि ये वो डिज़र्व करते हैं, ये ओ करते हैं, तो इसमें थैंक यू एंड ग्रेटफुल होने की क्या ज़रूरत है. But the truth is that no matter what you do or have, there is nothing in the world that states you deserve this or that. Rather, nothing in the world states you deserve to live a long, happy and successful life. आप चाहे कुछ भी कर ले या आपके पास कुछ भी हो जाए, कौन डिसाइड करता है कि आप एक अच्छा ही जिंदगी बिताओगे? That you deserve it just because you are like this or you are like that or you have this or you have that. Nothing. Our feeling of entitlement that what we deserve are created entirely within our own mind. हम क्या चीज़ के हकदार हैं ये हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में. ये हम डिसाइड करते हैं. We are the one who has created it. So for me to feel grateful, अगर मुझे grateful feel करना है for what I receive, I must translate my entitlement into gifts. So instead of seeing all that I receive as I deserve it, इसमें मेरा ही हक है. I must change the way I see it and think that all that is given to me is for my benefit. I must see it as gifts and recognize that I have no claim on them. मेरा उसमें कोई claim नहीं है कि I owe it. So I would suggest that don't take your gifts for granted. आप कोई चीज़ ओ नहीं करते हो. So if this information of taking things that comes to you as gifts seeps deep into you, your viewpoints over good or bad things will change forever. क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, it will all change for you forever. You will instantly find peace in those tough times. Rather, I would say that you'll find peace in every situation. And when you have peace in your heart, you'll be less susceptible to emotions such as anger, regret, disappointment, and frustration. And you will no more see the situation as I deserve it, but you will see the situation without any expectation. आप सारे situation को ऐसे देखोगे जैसे आपको कोई expectation है ही नहीं, और फिर जो आपको मिलेगा आप उसमें खुश नहीं, बहुत खुश होंगे. So whatever you receive, you will be like wow by it. And then you will actually see the benefit of being grateful.
The German moral philosopher Baldwin, he said, "The ungrateful, envious, complaining man cripples himself. He's focused on what he has not, particularly on that which somebody else has." मतलब किसी और के पास है or seems to have, and by that he tends to poison his world. वो किस पे फोकस कर रहा है और वो किससे कंपैरिजन कर रहा है और वो किससे इवैल्यूएट कर रहा है कि उसको क्या होना चाहिए या उसके साथ क्या होना चाहिए या क्या चीज़ उसे मिलना चाहिए फ्रॉम अदर्स. And when he does that, he poisons his own world and the outside circumstances. You are evaluating what you deserve by what others have, and then you're projecting negative emotion. आप वही तो कर रहे हो. What is happening? You are resulting in contaminating the energy of the world. आप कैसे सोचिए, आप कैसे evaluate करते हो what you deserve? By the environment, what others have? Think, is the real benchmark? कुछ भी हो सकता है. So this was our first obstacle. So tell me, can we change this attitude? Of course we can. Of course we can. But only by practice. If we continuously practice this and be aware of what we are doing and saying, we'll be able to change it. Now let's move on to the second obstacle, that is comparison. Now we are very familiar with this, isn't it? So every time you compared your status with others, so every time you compared your finances with others, every time you compared the vacation you had with others, and every time you compared your child with others. In short, whenever you compared anything with others, you are not appreciating the gift you have or the thing you have, isn't it? Just freeze this in your mind. Comparison is one way of not being grateful. Yes, being self-absorbed was one way. Now the second way was comparison. I would suggest that stand in front of the mirror and look into your eyes and tell yourself that remind me whenever I am comparing. जब भी मैं कंपेयर कर रही हूँ किसी को किसी भी चीज़ के साथ, मुझे मेरा माइंड वो सिग्नल दे कि दिस इज कंपैरिजन एंड यू आर बीइंग अनग्रेटफुल. Stand in front of the mirror and do this exercise so that whenever you compare, it will remind you. Comparing is a subtle way to be ungrateful. है कि नहीं? Think about it. हम compare कब करते हैं? And so we move on to the third and the last obstacle, which I guess is so common that we never notice it as a problem. हम कभी सोचते नहीं कि वो एक्चुअली में प्रॉब्लम भी है. And it is called you are supposed to attitude. I repeat, you are supposed to attitude. This is usually seen in between the couples. When does this happen? When we decide the work in our mind, or when we have our and our partner's role fixed in our mind. ये किसके बीच में होता है? ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में या कोई पार्टनर्स के बीच में ये मेनली देखा गया है. So what has happened? We decide the work of the partner in our mind. We decided, we fix the role in our mind. This person is supposed to do this work. And when we actually set it in our mind, okay, we feel that it is their duty and they are supposed to do it. Isn't it? And usi ke baad the problem starts. So when the other person thinks that it is the other person's duty to do certain things, he never sees the effort or work done as a gift. कभी देखता ही नहीं है वो as a gift. उसको तो ये लगता है ये तो उसकी ड्यूटी है. And thus, he is unlikely to feel grateful. But strangely, but true,
इफ़ द वर्क इज़ नॉट डन और डन प्रॉपरली, अगर वो कोई काम है जो अच्छे से नहीं किया गया या नहीं निभाया गया, द पार्टनर गेट्स एंग्री और अपसेट एंड इवन स्टार्ट्स टू ब्लेम द अदर पार्टनर फॉर नॉट अकम्प्लिशिंग इट. है कि नहीं? हम ब्लेम भी करने लग जाते हैं. पर किसने बनाया ये प्रोटोकॉल, किसको क्या करना है और तुमको क्या करना है? हमने ही तो बनाया है. एंड टेल मी, इज इट नॉट डेफिनेटली सब्जेक्ट टू चेंज? हो सकता है ना, इट कैन बी चेंज्ड. और जब हम किसी को ड्यूटी में बांध देते हैं, देन वी थिंक दे आर मेंट टू डू इट. ये उनकी ड्यूटी हो जाती है एंड दे आर ओब्लाइज्ड टू डू इट. And then all their effort seems like paying the price for the privilege they are receiving. मतलब एक तरीके से वो प्राइस पे कर रहे होते हैं for the privilege they are receiving. And that is the reason why. And यही बहुत बड़ा reason है why the partner loses interest in the task he or she is not appreciated. होता है कि नहीं? ये हाउसवाइफ्स के साथ कितनी बार होता है. उनकी चीज़ों को ग्रांटेड लिया जाता है, उनके काम को ग्रांटेड लिया जाता है. एंड देन मोस्टली देखा गया है कि उनके काम को ग्रांटेड लिया जाता है एंड दे डोंट फील अप्रिशिएटेड. फिर उनका मन उससे ख़त्म होते जाता है. आज जो आपने प्रोटोकॉल बनाया है, हो सकता है ना कि वो चेंज भी हो जाए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं. ये भी हो सकता है यू माइट लूज द कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय द अदर पर्सन. हो सकता है ना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो इफ यू आर लिविंग विद अ रूममेट हु डज कुकिंग फॉर बोथ ऑफ यू, ओके, बट शी गेट्स मैरिड एंड नाउ शी लीव्स यू. नाउ व्हाट? हैज द सिचुएशन नॉट चेंज्ड? अब तो सिचुएशन चेंज हो गया ना. जो आपका कंफर्ट था वो तो चला गया. अब ड्यूटी कहाँ गई? और इन अ मैरिज समझ लीजिए कि कोई ए एंड बी है, उनके बीच में झगड़ा हुआ एंड नाउ दे हैव पार्टेड देयर वेज. नाउ विल देयर लाइफ नॉट चेंज? अब कहाँ गई उनकी ड्यूटी? पर अगर आई शो ग्रैटिट्यूड ऑन अ डेली बेसिस, बट इफ I show gratitude on a daily basis, life will give me more reasons to be grateful and my relationship will always flourish. The economy of gratitude helps to explain the fact that husbands and wives are more satisfied in their marriages when one views a partner's household labor as a gift. But हम क्या करते हैं? हमने अपने मन में बांध लिया है हस्बैंड का ये काम है, वाइफ का ये. और जब वो ये काम करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो उनकी ड्यूटी है. तो बस फिर क्या, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? Researchers have found that individuals who feel appreciated by their partners do indeed express less resentment over the division of labor and greater satisfaction with their relationship than to those who feel that they are taken for granted. अगर आप आप एक्सप्रेस करोगे how grateful you are, you will see कि जो काम आपने सामने वाले पर्सन को दिया है उसको वो काम लगेगा ही नहीं. वो भी वो चीज़ को एंजॉय करेगा और आप देखोगे आप लोग का रिलेशनशिप भी अच्छा होते जाएगा. सो रिमेंबर, नो टास्क इज स्मॉल. इन रियलिटी इट इज़ अ फेवर एंड अ वे टू मेक आवर लाइव्स बेटर. वी आर सोशल एनिमल एंड वी वुड ऑलवेज नीड अदर्स इन आवर लाइफ फॉर एवरी लिटिल थिंग ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट? एंड इट इज़ अप टू अस how we take and perceive what we receive from the God. ये हम पर है. सो ये हमने ये 3 इम्पॉर्टेंट जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हमने समझे और ये हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं. पहला वाज
सिटिंग ऑन द हाई हॉर्स सिंड्रोम, जब हम अपने बारे में इतना सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि आई डिजर्व दिस, सो आई डोंट हैव टू बी ग्रेटफुल. सेकेंड इज जब भी हम कोई चीज़ को लेकर के कंपैरिजन करते हैं. एंड थर्ड इज जब हम ड्यूटी की तरह सामने वाले का काम को बांध देते हैं. Think about this and see how many times we have done that in our life. Now be mindful, be observant, and take charge of your life so that life brings you more and more reason to be grateful. So thank you so much everyone for giving me this opportunity to grow and shine with you all. May you and your loved ones have the strength and courage to express your heartfelt gratitude to all those who matters to you. With loads and loads of love and blessing from Team YouMatter. Thank you.